Hello students, today we are going to start with the new chapter of 10th English medium, Science 1, chapter number 8, Metallurgy. So before starting with this chapter, let us do some introduction. Now you know that the earth is an abundant source of material. Almost everything that is around us is useful for some purpose or the other, right? Like earth is surrounded by air, rock, water, plants, all this. We have studied in the lower classes also that earth is surrounded by the various things. Most of these materials are the compound of some or the other element. Now how this compound is made? They are made from the elements. And we know what is an elements? Yes, we know the elements. Elements definition is substance which cannot be further broken down into simpler substance by any physical and chemical means is called as the elements. This we have studied detail about this in the chapter number 2, periodic classification of element. Till now there are the 119 elements are there. Now elements basically classify into 3 types. We also know that is metals, non-metals and metalloids, right? So in this chapter we are going to study detail about the metals and non-metals. Okay, metalloid is, what is a metalloid? Metalloid are the elements which possess the property of both, which show the property of both metal as well as non-metal. Okay, now let us study detail in this chapter students. There are the lots of chemical reaction that you have to study. Okay, so let us start with the physical properties of metal first, and this all properties you also have learned in the lower classes, so it's a kind of a revision only. So first thing, physical state. What is physical state? Metals are a solid at a room temperature with exception of mercury and gallium which are in a liquid state. Now you know that the metals are generally solid in state, okay, but there are some exception like mercury and gallium, okay, that remain always in a liquid state. Okay, you can see here in the picture, one is mercury and one is gallium, that always remain in a liquid state, but still they are the metals. Okay, there are some exceptions are there. Second, metal is always luster. Luster means shining. Metals are always shine. Okay, metal is in the pure state have shine and can be polished. Example, gold. Malleability. Now what is malleability? Metals which have the ability to withstand hammering and can be made into thin sheet. This property is called malleability. Now you know that when the metal can be hammered and then can be made in a thin form of sheet. You can see here in this picture. Okay, this metals, these are the made up of aluminum. These are not a paper. Okay, this is aluminum sheet, okay, which has been hammered and made in the form of sheet, and this property is called as the malleability. Okay, so this is a property of metal. जो metal होगा वही ये property बता सकता है, right? Second, ductility. Now you know the ability of metal can be drawn into thin wire is called ductility. Like in this way, you have seen lots of wire. Okay, in our house also there are the lots of wiring is done. So whenever the metal is hammered and made in the form of wire, okay, जब वो वायर के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है तो उसके पास कौन सी प्रॉपर्टी होती है? डक्टिलिटी. डक्टिलिटी का मतलब ही होता है कि मेटल गेट कन्वर्टेड इनटू या ड्रॉन इनटू थिन वायर्स. दिस कैन बी हैपन ओनली इन मेटल, नॉट इन नॉन मेटल. Gold and silver are the most ductile metal. 1 gram gold can be drawn into wire of 2 kilometer length. 1 gram gold अगर आप देखेंगे 1 gram gold, okay, if it is hammered, okay, properly, then it can be drawn into a wire which is length of 2 kilometer. So this is possible, okay, but this is possible only for the gold. हर मेटल के लिए इतना लंबा वायर बनाना पॉसिबल नहीं है, बट येस इट इज़ गेट कन्वर्ट इनटू, इफ इट इज़ कॉपर, कॉपर आल्सो गेट कन्वर्टेड इनटू वायर because it has a ductility property. Okay, so these are the things that you should know. Next, conduction of heat. You have also heard this word conduction of heat. Means the metal has a property in which the metal can pass the electricity in a good amount. So metals are good conductor of heat and have high melting point. Okay, so metal does not wire like copper. मेटल का आपने सुना होगा, जैसे कॉपर है, ठीक है, एल्यूमिनियम है, सिल्वर वायर है, वो जल्दी मेल्ट नहीं होते. ओके, एंड दे हैव अ कैपेबिलिटी बिकॉज उनके पास जो मेल्टिंग पॉइंट है वो काफ़ी हाई होता है.
and because of this the high amount of electric current can pass. Therefore in our houses, in our school, in our colleges, okay, your working place, your office, तो वहाँ पे सभी जगह पे जनरली हम लोग कॉपर का वायर की वायरिंग करते हैं, ओके, बिकॉज इट इज़ चीपर ऑल्सो एंड इट प्रोवाइड द लेस वेस्टेज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी वो प्रोवाइड कर सकते हैं. नाउ यू कैन सी इन दिस वे. Silver and copper are the best conductor of heat. Therefore, we consider the silver and copper. There are lots of metal which allow the passage of electricity, but silver and copper are the best conductor which allow the amount of electricity to be passed. Right? Why we are not doing the silver wiring? Because it is little bit costlier. Okay, so copper is cheaper, so we do the copper wiring. See. Lead and mercury are the poor conductor of heat, and lead and mercury, these are the two elements, okay, these are the two metals which are the poor conductor of electricity, poor conductor of electricity as well as heat, okay, heat cannot pass in this. So I hope it is clear with the physical properties of metals, right? Malleability, ductility, there are the luster, okay, good conductor of electricity. There are more properties are there, like sonority. Metals also produce a good amount of sound. It was not here, but metals produce good amount of sound also, okay, that is sonority. Okay, now next we'll talk about the non-metals. Now first of all, non-metals are hardness. If we talk about the hardness, non-metals do not possess the property of hardness. Metals are generally solid, so they are hard, but non-metals are not hard. But if we consider the diamond, carbon is in the form of diamond is an exception, as it is the hardest substance known. But the diamond is, if you consider, it is the hardest substance, okay, and but this diamond come under the non-metal, okay, because it is made up of carbon. Carbon element is there, and carbon is non-metal, but still it is considered to be the hardest element in the world, okay. So this is exception now again. Melting and boiling point. Non-metals have low melting and boiling point. Non-metals के पास हमेशा melting point और boiling point दोनों कम होते हैं. Sonority. If you talk about the sonority, non-metals are non-sonorous. Okay, if you take a plank of wood, लकड़ी का एक piece लेते हैं और उस पर आप hammering करते हैं, तो it does not get more sound. Okay, but if you take a metal gong, okay, and if you hammer it, so the sound will be produced more. So metals produce more sound. Non-metals are non-sonorous. They do not produce the sound. So physical properties, if we compare here, okay, in a form of chart, metals physical state. In the case of metal, solid state, exception mercury and gallium. This we have studied. This is just a short recap. Mercury is represented by Hg and gallium symbol is Ga. While non-metals, all the three states. Non-metals कोई भी states में हो सकते हैं, solid, liquid और gases. Luster, if we talk, lustrous metals are always shiny, but the non-metals are not shiny except the iodine and diamond. Iodine is also an element which is also shine, okay, but it comes under the non-metal. And diamond, you know, diamond is always shine, it is known for its shine, okay, but it comes under the non-metal. Malleability, it is malleable, that can be drawn into thin sheet. Non-metal cannot be drawn into thin sheet, non-malleable. Ductility, yes, it can be drawn into wire, thin wire. Ductile, it is non-ductile, it cannot drawn into thin wire. Conduction of heat, good conductor of heat. Silver and copper, best conductor, while the lead and mercury are the poor conductor. While in the case of non-metal, poor conductor of heat. Okay, non-metals में generally heat is almost negligible. Conduction of electricity in metal, it is a good conductor of electricity, while in the non-metal it is a bad or poor conductor of electricity, except graphite, okay, which is used in the pencil also, if you have seen, okay, in your pencil the graphite element is used, okay, it is a good conductor of electricity, but it comes under the non-metal. Hardness, it is metals are generally hard except the sodium and potassium, they are very soft. Sodium and potassium, these are the metals, okay, this you have studied in periodic classification of element also chapter, okay, but they come under the metal, okay, but they are not hard, they are very soft, they can be cut even with the knife also, very soft. While non-metals are generally brittle, they are soft, they can be broken very easily. Example, exception, except carbon is in the form of diamond. जो कार्बन होते हैं, ठीक है, जो डायमंड के फॉर्म में कार्बन होता है, तो उसको ब्रेक करना मुश्किल है.
Melting point and boiling point is high in the case of metal, while exception sodium and potassium, they are very low. Okay, so therefore they are kept generally under the kerosene. If sodium, if you bring in the atmosphere, it catches the fire. Okay, because it has very less melting point or boiling point. So metals के पास जो generally high melting point और boiling point होना चाहिए, but exception है ये दो केस, सोडियम एंड पोटेशियम, इनके पास लो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट है. नॉट लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट नॉन मेटल्स में होते हैं, एक्सेप्शन डायमंड हैविंग वेरी हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट. ओके, सभी नॉन मेटल्स के जो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट होते हैं लो होते हैं, बट इफ़ यू कंसिडर द डायमंड इट हैज़ अ हाइस्ट मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट. सोनोरिटी, इट इज sonorous metals and non-metals are non-sonorous. Okay, now we'll start with the, these are the some properties that we have studied. Okay, physical states, physical properties of metals as well as non-metals. Now let us start with the chemical properties. Okay, see there are the lots of properties that we have studied about physical properties of metal and non-metal, but why there is a need of to study the chemical properties of metals? Okay, have you thought? Yes, there is a need of chemical properties to study the chemical properties, because physical property do not give me the satisfactory answer. देखिए अभी आपने देखा कि जनरली नॉन मेटल्स जो होते हैं, ठीक है, वो हार्ड नहीं होते, लेकिन डायमंड इज़ वेरी हार्ड, हार्डेस्ट सब्सटेंस. ओके, तो उसको स्टडी करना है, वो एक्सेप्शन है. ऐसे मेटल्स में आपने देखा है, ठीक है. तो मेटल्स जनरली क्या होते हैं, सॉलिड होते हैं. ओके, बट सोडियम एंड पोटेशियम दे आर मेटल बट दे आर नॉट सॉलिड, दे कैन बी कट वेरी इजली. ओके, सो ऑल दिस प्रॉपर्टीज टू स्टडी फिजिकल प्रॉपर्टी सफिशिएंट नहीं है पढ़ने के लिए. ठीक है, फिजिकल प्रॉपर्टी पढ़ना है लेकिन उतना सफिशिएंट नहीं है. So therefore we are going to study about the chemical properties of metals as well as the chemical properties of non-metals. Okay, so these are the three elements that you have to know in this chapter, because वैसे तो बहुत सारे elements है, बहुत सारे chemical properties है, but you are not going to study all that things because the chapter will be too lengthy for that. तो आपके सिलेबस में ये सब एलिमेंट्स है, इसके केमिकल रिएक्शंस आपको पढ़ने हैं और आपको याद रखना है. ओके, and you can see here the elements on your screen. Okay, start with the potassium, सबके symbols भी है. Okay, sodium, calcium, magnesium, aluminum, zinc, iron, lead, copper, mercury, silver and gold. Okay, now if you see this arrow, okay, this arrow is in the downward side, you can see this arrow is downward side in this way, right? So this show that the decrease का मतलब क्या होता है कि reactivity decrease, the power of element, reactivity जो होता है, पावर जो होता है एलिमेंट का, वो डिक्रीज होता जा रहा है जैसे जैसे ये नीचे की तरफ बढ़ेगा. ठीक है, इफ़ आई कंसिडर फर्स्ट द सोडियम. ओके, तो व्हाट अबाउट द सोडियम? सोडियम एज अ हाईएस्ट पावर, बिकॉज वो टॉप लिस्ट में वो टॉप नंबर पे, फर्स्ट नंबर पे, राइट. तो उसके पास जो पावर होगा रिएक्शन का वो सबसे ज़्यादा होगा. ओके, देन सेकेंड नंबर इज सोडियम, थर्ड कैल्शियम, सिमिलरली मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, एंड इट गोज, एंड लास्ट इज व्हाट, सिल्वर एंड गोल्ड. सो सिल्वर एंड गोल्ड रिएक्ट ना के बराबर करेंगे, दे विल नॉट रिएक्ट ऑलमोस्ट. ओके, आपने देखा होगा सिल्वर और गोल्ड जो एलिमेंट्स होते हैं, जो उसके ऑर्नामेंट्स बनते हैं. ओके, यू हैव द सिल्वर, यू हैव द गोल्ड ऑर्नामेंट्स. ओके, या कॉइन्स होते हैं या बिस्किट्स होते हैं सिल्वर के या गोल्ड के, वो जल्दी ख़राब नहीं होते. ओके, दे ऑलमोस्ट बहुत मुश्किल से वो ख़राब होते हैं. ओके, उन पे एसिड का कोई असर नहीं होता, उनके ऊपर वाटर का कोई असर नहीं होता, उनके ऊपर मॉइस्चर का कोई असर नहीं होता. ओके, बिकॉज दे डू नॉट रिएक्ट बेसिकली, क्योंकि उनका जो रिएक्टिव पावर है वो बहुत कम है. ये लिस्ट में आप देखिए, सिल्वर और गोल्ड, सिल्वर सेकेंड लास्ट और गोल्ड तो लास्ट है. इसके लिए ये वैल्यूबल एलिमेंट्स हो जाते हैं, इसके लिए कॉस्टली एलिमेंट्स हो जाते हैं. ठीक है, तो क्योंकि वो रिएक्ट नहीं करते, वो ख़राब नहीं होते जल्दी एलिमेंट. ओके, तो जिसका पावर ज़्यादा होता है वो जल्द से जल्द रिएक्ट करते हैं दूसरे एलिमेंट के साथ और नया प्रोडक्ट बनाते हैं. किस तरह से नया प्रोडक्ट बनाते हैं, दैट वी आर गोइंग टू स्टडी इन दिस चैप्टर. एज वी मूव डाउन, okay, reactivity decreases. So this series you have to know. Okay, sodium, potassium, sodium, calcium, magnesium, aluminum, zinc, iron, lead, copper, mercury, silver and gold. You can note this series, okay, in your notebook. It is there in your textbook also, you can write down. तो ये सीरीज़ के हिसाब से सभी एलिमेंट्स के रिएक्शन हम लोग देखेंगे. ठीक है, जिसका जितना ज़्यादा पावर होगा उतना वो जल्दी रिएक्ट करेगा. ठीक है, K is the most reactive element, while if you see the silver and gold is a least reactive element, क्योंकि gold last लिस्ट में लास्ट नंबर पे आ रहा है. So this is a reactivity series. Okay, so the arrangement of the metal in the decreasing order of the reactivity in the form of series is called the reactivity series of the metal.
Now first reaction will take with oxygen. Okay, so let us start reactions. So almost all the metal react with oxygen, सब metals okay react with oxygen होते to form the metal oxide, और ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करने के बाद क्या बन जाता है वो मेटल ऑक्साइड्स. ओके, जो भी मेटल होता है ओके जब वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो क्या बन जाता है मेटल ऑक्साइड. डिफर फॉर द डिफरेंट मेटल्स. नाउ लेट अस सी एग्जांपल. मेटल प्लस ऑक्सीजन विल गिव मी द मेटल ऑक्साइड. दिस इज अ जनरल रिएक्शन दैट यू शुड नो. कोई भी मेटल है अगर सोडियम है तो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बन जाएगा सोडियम ऑक्साइड. नाउ लेट अस सी जैसे पोटेशियम, के स्टैंड फॉर पोटेशियम. ओके, व्हेन इट इज एक्सपोज टू एयर, एयर मीन्स ऑक्सीजन, व्हेन इट रिएक्ट विद ऑक्सीजन यू नो इट इज रिटन एज O2. सो प्रोडक्ट जो बने आपको पता है लेफ्ट हैंड साइड पे जो लिखा जाता है वो रिएक्टेंट होते हैं, राइट हैंड साइड पे प्रोडक्ट होता है, बीच में एरो होता है. ऑल दिस थिंग्स वी हैव स्टडीड इन द चैप्टर नंबर 3 केमिकल रिएक्शंस चैप्टर. आई होप यू नो हाउ टू राइट द रिएक्शंस नाउ एंड प्लस हाउ टू बैलेंस द रिएक्शन. ओके, ये सब आपको अब पता होना चाहिए. ठीक है. So this forms a potassium oxide. When potassium react with oxygen, it forms a potassium oxide. तो आप बैलेंस कर सकते हैं. के के पास 2 एटम है तो राइट हैंड साइड में, तो लेफ्ट हैंड साइड में 2 आ जाएगा. एंड अगर मैं 2 लगा देता हूँ, ऑक्सीजन के पास भी 2 एटम है तो 2 यहाँ पे 4 हो जाता है तो इट बिकम्स 4. नाउ इट इज़ बैलेंस्ड. नाउ इन दिस चैप्टर यू नो हाउ टू बैलेंस द रिएक्शंस. ओके, वी हैव ऑलरेडी स्टडीड. तो प्लीज़ आप बैलेंसिंग सीख लीजिए इफ़ यू डोंट नो द बैलेंसिंग द रिएक्शन. ओके, फ्रॉम द चैप्टर नंबर 3. It is very important because in this chapter we are going to study about all these reactions only, ज़्यादातर. Next reaction is sodium. When react with oxygen, you know what it forms? Sodium oxide, Na2O. अगर आप देखेंगे लेफ्ट हैंड साइड में, राइट हैंड साइड में Na के पास 2 आइटम है. यू कैन सी हियर 2 आइटम्स आर देयर, राइट. सो राइट हैंड साइड में, लेफ्ट हैंड साइड में भी हम लोग 2 लगा देंगे. ये देखिए यहाँ पे 2 लगा दिया. ओके, नाउ ऑक्सीजन ऑन द लेफ्ट हैंड साइड आप देख सकते हैं यहाँ पे 2 एटम है. सो यहाँ पे भी आपको 2 लगाना पड़ेगा. रूल्स आपको याद है हाउ टू बैलेंस द रिएक्शन? येस, यू शुड नो द रूल्स. ओके, दैट रूल्स यू विल कम टू नो ओनली फ्रॉम द चैप्टर नंबर 3. इफ़ यू हैव नॉट डन प्लीज़ गो थ्रू इट, रिवाइज इट एंड देन कम टू दिस चैप्टर. तो यहाँ पे 2 आप लगा देंगे. यहाँ पे देखिए लेफ्ट हैंड साइड पे लगाया जाता है 2. इट्स अ रूल. नाउ यू नो सोडियम के पास कितना आइटम हो गया? 2 2 4. तो यहाँ पे सोडियम के पास लेफ्ट हैंड साइड में 2 के बदले क्या आ जाएगा? 4. सो इट विल बी चेंज्ड एज 4. So is it clear with this? So sodium and potassium, that is Na and K, being the most reactive, react with oxygen at the room temperature to form the corresponding oxides. Hence sodium and potassium are the stored under the kerosene to prevent its reaction with oxygen and carbon dioxide and moisture, because it immediately react with the air, immediately react with the carbon dioxide, okay, which is there in the air. Okay, इसके लिए उसको हमेशा केरोसिन में ही रखा जाता है. Magnesium does not react with the oxygen at the room temperature, but on heating, magnesium burns in air with the intense light and heat to form the magnesium oxide. This we have seen in the lower classes also. If you take a magnesium ribbon, okay, and if you keep it in oxygen, it does not burn, it does not react with the air. ठीक है, वो डायरेक्ट रिएक्शन नहीं करेगा, लेकिन आपको उसको हीट देना पड़ेगा मैग्नीशियम रिबन को. जब आप मैग्नीशियम रिबन को हीट देंगे, ओके, यू विल प्रोवाइड द हीट इन द फॉर्म ऑफ एनी फॉर्म ऑफ हीट. ओके, सो मैग्नीशियम रिबन विल स्टार्ट बर्निंग. तो देखिए पहले 2 एलिमेंट जो थे सोडियम एंड पोटेशियम, वो उसको हीट करने की ज़रूरत नहीं थी. वो डायरेक्टली रूम टेम्परेचर में आप उसको लेके आइए, अपने आप जलना चालू हो जाएंगे, अपने आप बर्न होना चालू हो जाएंगे एंड रिएक्शन बन जाएगा उसका. ओके, बट नाउ इफ़ आई टॉक अबाउट द मैग्नीशियम, ओके, सो मैग्नीशियम डज नॉट रिएक्ट डायरेक्टली विद द ऑक्सीजन, यू हैव टू प्रोवाइड द हीट. सो व्हेन मैग्नीशियम Mg, व्हेन यू प्रोवाइड द हीट टू इट, ओके, जब आप हीट देते हैं इन द फॉर्म ऑफ, कैसे भी कोई भी फॉर्म में हीट आप प्रोवाइड करते हैं. ओके, जब आप उसको जलाते हैं मैग्नीशियम रिबन को इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, सो व्हाट विल हैपन? इट विल फॉर्म अ न्यू प्रोडक्ट. ओके, राइट हैंड साइड पे जो बनता है वो प्रोडक्ट होता है, दैट इज MgO, दैट इज मैग्नीशियम ऑक्साइड. नाउ यू नो व्हाट इज दिस ट्राइंगल रिप्रेजेंट. ये ट्राइंगल क्या रिप्रेजेंट करता है? ट्राइंगल रिप्रेजेंट द हीट सिंबल. यू नो दिस इज कॉल्ड एज हीट, इसे हीट बोलते हैं. ओके, वी हैव स्टडीड ऑल्सो. ओके, बैलेंस दिस रिएक्शन, चेक कर लीजिए बराबर बैलेंस्ड हुआ है. ओके, नाउ जिंक बर्न्स इन एयर ओनली ऑन स्ट्रॉन्ग हीटिंग टू फॉर्म द जिंक ऑक्साइड. नाउ अगर मैं देखिए ये जो मैंने बात की है एलिमेंट की, कौन से एलिमेंट की बात की? मैग्नीशियम. सो यहाँ पे देखिए ये मैग्नीशियम लिखा हुआ है ना बोर्ड पे, राइट.
और कैल्शियम भी सेम फॉर्म का होगा, राइट. कैल्शियम व्हेन रिएक्ट विद ऑक्सीजन इट फॉर्म्स द कैल्शियम ऑक्साइड. कैल्शियम को भी बर्न करने के लिए आप खाली कैल्शियम को ऑक्सीजन में लेके आ जाइए तो अपने आप जलने नहीं लगेगा, आपको उसको जलाना होगा. ओके. तो सिमिलरली मैग्नीशियम का वैसे ही है. तो मैग्नीशियम एंड कैल्शियम का रिएक्शन जो होगा सेम होगा. यू हैव टू प्रोवाइड द हीट. बट इफ़ आई टॉक अबाउट द जिंक, यहाँ पे देखिए ये जिंक लिखा है ना Zn. तो जिंक के बारे में क्या बोला है, जिंक बर्न्स इन एयर ओनली ऑन स्ट्रॉन्ग हीटिंग टू फॉर्म द जिंक ऑक्साइड. तो जिंक को बर्न करने के लिए आपको छोटा सा हीट प्रोवाइड करना पड़ेगा, ऐसा नहीं है, आपको बहुत ज़्यादा हीट प्रोवाइड करना पड़ेगा. स्ट्रॉन्ग हीटिंग आपको प्रोवाइड करना पड़ेगा, तभी जिंक ऑक्साइड बनेगा. व्हेन यू हीट, when you provide the heat to the zinc, okay, not a small heat, you have to provide the strong heat, okay, to the zinc in the presence of oxygen. तो आपका बन जाएगा जिंक ऑक्साइड. इसका बैलेंस करके देख लीजिए, चेक कर लीजिए ये बैलेंस बराबर है. ओके, चेक डाउन दिस रिएक्शन. आई विल वेट एंड देन आई विल मूव टू फर्दर. ये बैलेंसिंग बराबर है, ये चेक कर लीजिए बैलेंसिंग करेक्ट. This is important. Okay, this is done, balancing. Okay, so we have studied about this till now. देखिए कि पोटेशियम सोडियम के बारे में हम लोग ने देखा. ओके, दे रिएक्ट डायरेक्टली इन द रूम टेम्परेचर, उसको हीट करने की ज़रूरत नहीं. जबकि कैल्शियम मैग्नीशियम को आपको हीट प्रोवाइड करना ज़रूरी है, देन ओनली इट विल फॉर्म द ऑक्साइड. ओके, बट अ स्मॉल अमाउंट ऑफ हीट विल बी सफिशिएंट. सिमिलरली अगर मैं जिंक की बात करूँ, जिंक, ओके, जिंक इज ऑल्सो एन एलिमेंट. ये सीरीज़ में है ना, क्योंकि यहाँ पे देखिए बोर्ड में जितने एलिमेंट्स लिखे हैं सबके रिएक्शंस आप देखेंगे. बस ये चैप्टर में ये सबके रिएक्शंस आपको देखने हैं. देन आगे का दूसरा पार्ट है रिफाइनिंग ऑफ मेटल्स, ऑल दैट वी विल स्टडी लेटर. ओके, यही चैप्टर में है. तो रिएक्शन आपको ये सब एलिमेंट्स के याद रखने होंगे. ओके, दे आस्क इन द बोर्ड एग्जामिनेशन ऑल्सो. ऐसे रिएक्शंस आपको दिए रहेंगे या आपको ब्लैंक करके बॉक्स करके दिए रहेंगे, आपको फिलअप करना है, या आपको रिएक्शंस डायरेक्टली याद रखना है, या आपको पूछेंगे व्हाट हैपन व्हेन जिंक रिएक्ट विद ऑक्सीजन. तो आपको पता है कि जिंक ऑक्साइड बनता है, तो आपको रिएक्शन लिख के बैलेंस करके बताना है. ओके, समटाइम्स ट्रू फॉल्स में भी पूछ सकते हैं. रिएक्शन दिया है, पूछेंगे ये ट्रू है फॉल्स है, सही दिया रहेगा या गलत दिया रहेगा, तो आपको उसको चेक करना है. सो ये आपको तभी पता चलेगा जब आपको सभी रिएक्शंस याद होंगे. तो कैल्शियम मैग्नीशियम को आपको हीट देना पड़ता है. ओके, स्मॉल अमाउंट ऑफ हीट विल बी सफिशिएंट, वाइल द जिंक आपको बहुत ज़्यादा हीट देना पड़ता है, देन ओनली इट विल फॉर्म द जिंक ऑक्साइड. ओके, सो सेम अप्लाइज गोज फॉर द एल्यूमिनियम ऑल्सो. ठीक है, तो हम लोग दो दो के एलिमेंट्स की तैयारी कर रहे हैं. जैसे फर्स्ट पोटेशियम एंड कैल्शियम, सोडियम सॉरी. सेकेंड कैल्शियम एंड मैग्नीशियम, जिसमें आपको हीट देना पड़ता है, स्मॉल अमाउंट ऑफ हीट. जबकि एल्यूमिनियम एंड जिंक में आपको हीट देना पड़ता है, बट विच काइंड ऑफ हीट? Strong heat you have to provide. So I hope it is getting clear with